Hello everyone, this question appears in Class 7th NCERT Chapter of Perimeter and Area. This is second question of its exercise 11.2. So the question says that find the area of each of the following triangles. So area of triangle is equal to half into height into base. So for figure A, area is equal to half into height into base is equal to half. हाइट गिवन है यहाँ पे हमें फर्स्ट फिगर के लिए 3 एंड बेस है 4. 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम. सो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. फॉर फिगर बी, एरिया इज इक्वल टू, हमारा ट्राइंगल है तो हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा 5 एंड हाइट हो जाएगी 3.2. 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1.6 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. फॉर फिगर सी, area of triangle is equal to half height into base. 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम. 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड फॉर फिगर डी, area is equal to half height into base. 2 से 2 1 टाइम, so 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. थैंक यू.